the occurring and non-occurring of one event does not affect the occurring and non-occurring of the other event, then the two events they are being called to be as the independent events. तो इसका मतलब बड़ा ये हुआ कि सपोज इफ ए एंड बी, if A and B they are the two events, if A and B they are the two events, and for that two events A and B, suppose if the event A whether it occurs और बड़ा इट डज नॉट अकर्स, उसका अगर कोई भी इफेक्ट अगर बी के ऊपर नहीं होता है या वाइस वर्सा बड़ा बी इज द इवेंट वेदर इट अकर्स और बड़ा इट डज नॉट अकर्स, अगर उसका कोई भी इफेक्ट बड़ा अगर ए के ऊपर नहीं होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। या तो फिर बड़ा इन अदर वर्ड्स इफ द outcome of one event does not affect the outcome of other event, then the two events they are being called to be as independent events। तो इसका मतलब बड़ा यहाँ पे ये हुआ कि ए एंड बी के बड़ा आउटकम्स अगर एक दूसरे को बड़ा अफेक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि ए का आउटकम अगर बी को अफेक्ट नहीं करेगा और बी का आउटकम अगर ए को अफेक्ट नहीं करेगा, then the two events it will be called to be as the two events it will be called to be as independent events। दो में से बड़ा कोई भी डेफिनेशन यूज करो, the meaning will remain बड़ा one or the same। and up till now we have carried out बड़ा all the practical examples है कि नहीं, बहुत सारे बड़ा कॉइन टॉस कर लिए, बहुत बार बड़ा डाइस को भी रोल कर लिया हम लोग ने बड़ा, बहुत बार कार्ड भी सिलेक्ट हो गए है ना। नाउ समथिंग डिफरेंट है कि नहीं। टेल मी सपोज in general example if I say that there is a rainfall, there is a rainfall and there is a board examination, there is a rainfall and there is a board examination। तो तुम लोग मुझे बताओ कि रेनफॉल का रेनफॉल का और बोर्ड एग्जाम का कोई लेना देना है? ऐसा होगा रेनफॉल होगा तो ही बोर्ड एग्जाम होगा रेनफॉल अगर नहीं हुआ तो बोर्ड एग्जाम भी नहीं होगा। तो सी here the outcome of one event is not going to affect the outcome of other event, therefore it is considered to be as an example of independent event। चलो अब यही एग्जांपल में ना थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, ट्विस्ट। if I say that there is a public holiday and there is a board examination, मुझे बताओ ये बात कुछ बड़ा हजम होगी तुम लोग से?
सब लोग बड़ा क्या सोचना चालू कर दोगे कि सर ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अगर पब्लिक हॉलीडे है तो सर उस दिन बोर्ड एग्जाम नहीं हो सकता है, और बोर्ड एग्जाम है बड़ा तो उसी दिन बड़ा पब्लिक हॉलीडे नहीं होगा। आउटकम ऑफ वन बड़ा is going to affect the outcome of other. वो एग्री करते हुए नहीं करते बड़ा। एंड पब्लिक हॉलीडे मीन्स सब लोग को समझ में आता है ना बड़ा, पब्लिक हॉलीडे मीन्स क्या होता है। 15th August, 26th January, 2nd October, they are all called to be as public holidays. Everyone should make a note of that. Is Sunday is not considered to be as a public holiday. संडे के दिन बड़ा एग्जाम्स होते हैं, संडे के दिन बड़ा एग्जाम्स होते हैं। अपना सीए का जो एग्जाम होगा बड़ा वो भी संडे को होगा बड़ा, है ना। तो ये जो मैंने एग्जांपल तुम लोग को बताया बड़ा कि देयर इज अ पब्लिक हॉलीडे एंड देयर इज अ बोर्ड एग्जाम बड़ा, but this is not an example of independent event children, because in this given example the outcome of one event is going to affect the outcome of other event. Therefore it is not considered to be as an example of independent event. एंड तो भी मान लो अगर कोई बच्चा जीत करे, रोने लगे और कहे नहीं सर नहीं, आप हम लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही दो, तो चलो उछालो बड़ा फिर से सिक्के। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, गेटिंग अ हेड और टेल, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, गेटिंग हेड और टेल is an example of independent events. अब यहाँ पे बड़ा तुम लोग जब कॉइन को बड़ा टॉस करोगे तो बड़ा इंडिपेंडेंटली तुम लोग को बड़ा हेड भी मिल सकता है, इंडिपेंडेंटली बड़ा तुम लोग को टेल भी मिल सकता है। ऐसा होता है कि अगर पहले कॉइन टॉस किया बड़ा और उसमें अगर तुम लोग को हेड मिला तो ही तुम लोग को नेक्स्ट टाइम बड़ा टेल मिलेगा, या फिर पहले तुम लोग को बड़ा टेल मिला तो उसके बाद ही बड़ा तुम लोग को सेकेंड टाइम बड़ा हेड मिलेगा। ऐसा होता है बड़ा जितनी भी बार तुम लोग कॉइन को टॉस करो independently, but either you can get a head or you can get a tail. कोई किसी के ऊपर बड़ा डिपेंडेंट नहीं है। सेकेंड एग्जांपल इज द रोलिंग ऑफ अ die, getting an even number or odd number is an example of independent events. Like that, there are number of examples which can be given for independent events. तुम लोग भी फाइंड कर सकते हो और ये एग्जांपल्स फाइंड करके फिर तुम लोग मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे। Here we complete the 5 types of events. 5 types of events we have completed. And after this, there comes the definition of probability of an event. अब यहाँ पे थोड़ा मैंने जो वर्ड यूज किया है
वो डेफिनेशन वर्ड यूज किया है। लास्ट लेक्चर में जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था बड़ा, तब मैंने तुम लोग को प्रोबेबिलिटी का बड़ा मीनिंग बताया था, राइट? आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोबेबिलिटी। और आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ बड़ा, वो डेफिनेशन है। सबसे पहले तो बड़ा सब लोग ये पॉइंट नोट कर लो बड़ा, कि ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है। जब मैं बड़ा तुम लोग को डेफिनेशन पूछूं बड़ा, तो मुझे डेफिनेशन का आंसर देना है बड़ा। डेफिनेशन जब मैं पूछूं तब डांस नहीं करना है सर। चांस, चांस, सर, मोस्ट लाइकली, बड़ा वो सब उसके मीनिंग्स है, मीनिंग्स। अब यहाँ पे मैं तुम लोग को बड़ा डेफिनेशन पढ़ाने वाला हूँ। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, it is been defined it is been defined to be as the ratio of the number of elements which are present in the event to the number of elements which are present in the sample space. रेशियो बोला है बड़ा, रेशियो। इसका रेशियो, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स which are present in the event to the number of elements which are present in the sample space. And if A is any event, make a correction, only event name. If A is any event, if A is any event, then very good. There comes the formula for finding the probability. There comes the formula for finding the probability. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Of A. The probability of A is equal to n of A upon n of S. If A is an event, then the formula for finding the probability of the event A is given by P of A is equal to n of A upon n of S. But this is the formula for finding P of A.
formula for finding P of A, and on the same line you answer is suppose if capital B is an event. So formula for finding probability of B will be equal to correct. The formula for finding P of B, it will be equal to N of B upon N of S. Formula for finding probability of C will be equal to N of C upon N of S. Probability of D is equal to N of D upon N of S. And now after that there comes a point to be remembered. The first point it states that is 0 is less or equal to P of A, and P of A it will be always less or equal to 1, which is always true. So from this we have studied about the range. What we have studied about the range. The probability of any event always it will lie between 0 to 1, including 0 and 1, including 0 and 1. तो चलो मुझे बताओ बच्चा लोग, what will be the minimum value? The probability of any event will have the minimum value 0. What will be the maximum value? याद रखना बेटा, कभी भी probability of any event वो कभी भी बड़ा 1 से ग्रेटर नहीं होगा, या कभी भी उसका आंसर बड़ा लेस देन 0 नहीं होगा. What is the meaning of the term बड़ा less than 0? Negative. Answer will always lie between 0 and 1. अगर तुम्हें उसका आंसर 1 से ग्रेटर या लेस देन 0 तुम्हें मिला तो समझ जाने का कि इन द सम यू हैव मेड ऑफ मिस्टेक.
नेक्स्ट सेकंड पॉइंट बड़ो, ये देखो द एक्सट्रीम वैल्यू फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट आई 0 and 1 बड़ो। तो दिमाग जो है बड़ा कहीं ना कहीं सोचता तो ही बड़ो कि सर आउट ऑफ द given events which we have studied bro, probability of which event it will be considered to be a 0 and probability of which event it is considered to be as 1. So the answer is very simple bro. The probability of n bro, impossible event answer is equal to 0. अब तुम लोग यहाँ पे सोचते हो कि सर ऐसा क्यों, तो बड़ा मैंने आज ही तुम लोग को पढ़ाया था व्हाट इज इम्पॉसिबल इवेंट। चलो कौन रिपीट करेगा बड़ा इम्पॉसिबल इवेंट? इवेंट whose occurring is not possible. That type of event is called to be as impossible event. तो बड़ा फॉर्मूला जो तुम लोग ने अभी भी पढ़ा था वो क्या था? P of A is equal to it is n of A upon n of S. बराबर है? But since event is impossible event, number of elements which are present in the event A will be 0. And we know that no, is 0 divided by any number. Correct. The answer will be equal to 0. तो हमेशा याद रखना है कि probability of an impossible event, the answer will be always equal to 0. Next, third, the probability of a certain event, it is equal to 1. अच्छा, आज ही मैंने पढ़ाया था तुम लोग को सर्टन इवेंट, आज ही मैंने पढ़ाया था कि नहीं बोलो? और उसमें मैंने क्या कंडीशन बताया था तुम लोग को? सर्टन इवेंट के लिए कंडीशन क्या था अपना? If the event is a certain event or what it is a exhaustive event, in that case n of A is equal to n of S. तो तुम लोग ने तो फॉर्मूला पढ़ा है P of A का। What is P of A is equal to n of A upon n of S, राइट? बट यहाँ पे n of A एंड n of S ये दोनों तो एग्जैक्टली सेम है, एंड सिंस दे आर एग्जैक्टली द सेम, तो लाइक टर्म्स हमेशा क्या हो जाएगी कैंसल। एंड ये देखो लाइक टर्म्स व्हेन दे विल गेट कैंसिल तो तुम्हारे पास क्या बचेगा वहां पे? वन। Here we complete the 3 important points, है ना? And we completed types of events. तो देखो आज क्या क्या कंप्लीट किया हम लोग ने? We completed today all the 5 important types of events.
We studied the definition of probability of an event, and we have studied 3 points. बराबर. 4th point, 5th point but will continue in the next lecture. और नेक्स्ट लेक्चर से बड़ा स्टार्ट हो जाएगा सम्स, अपने सम्स विल स्टार्ट बड़ा विद द सम्स. तो जितना भी मैंने पढ़ाया बड़ा सब रिवाइज कर लेना. चलो बड़ा विल स्टॉप हियर. बाय ऑल ऑफ यू.